Welcome back again, dear students. Today we shall be going live for class 8th, and our topic and chapter, it is Algebraic Identities. We have understood algebraic expressions. We have learned about expressions. Expressions क्या है, expressions किन चीजों से बनती हैं, terms क्या हैं. So, dear students, अब expressions के बाद आज जो हमारा topic है, that is algebraic identities. I have a good question. What is an identity? How do we define it? ये पता कैसे चले कि कोई given equality या equation identity है या नहीं है? Let's proceed. We have an equality here. We have taken this as an example. Let us learn from a simple example and later we will generalize. We have an equality here that is a plus 1 multiplied by a plus 2. Dear students, we have already learned about binomials. We have learned about product of binomials. So we have here two binomials. एक binomial है a plus 1 और एक binomial है a plus 2. ठीक है, a plus 1 multiplied by a plus 2 equals a square plus 3a plus 2. अब यहाँ sign of equality है, इसीलिए we call it as equality. Equality means the LHS of this equation is equal to RHS. Now let us solve this equality having variable a for value 10. Let us take value of a as 10. So we proceed like this. For if a equals 10, we solve left hand side first. So it is a plus 1 multiplied by a plus 2. Okay? That is the LHS of our equality. Let us visualize it here like this. It is a plus 1 multiplied by a plus 2. ठीक है? अब equality याद रखिएगा. अब we imagine it being equality, equation, a balance. There should be a balance. We have a plus 1 multiplied by a plus 2, and we substitute value a with 10. So instead of a, मैं इधर 10 लिखता हूँ, 10 plus 1, और यहाँ मेरे पास है 10 plus 2. You see? Then we further process it. 10 plus 1 turns out to be 11. We write 11 here. And 10 plus 2, it is 12. And if we find product of 11 and 12, it is 132. So our left hand side of the equality, ये बन गया 132. Let us solve its right hand side. That is, this is a square plus 3a plus 2. I write it here. A square plus 3a plus 2. Substituting the value for a, हमने a का value 10 लेना है. It is 10 square plus 3 times 10 plus 2. So 10 square is 100 plus 3 tens is 30 plus 12. Sorry, it is 2. So we got 132. देखिए यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है. We have an equality. It is a plus 1 multiplied by a plus 2
equals a square plus 3a plus 2, इसमें वेरिएबल a है और हमने a का वैल्यू 10, एक एग्जाम्पल की शक्ल में हमने इसका वैल्यू 10 लिया और जब हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू किया हमारा LHS जो है it turns out to be 132 and our right hand side it also turns out to be 132. अब देखिए a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से LHS और RHS इक्वल होंगे. Let us move to another value for the same equality. Let us take now it as -5. I write here the equality is, for left hand side it is again a plus 1 excuse me please. I have a plus 1 multiplied by a plus 2. इसका वैल्यू मुझे लेना है a equals -5 plus 1 multiplied by -5 plus 2. Moving ahead, -5 plus 1 is -4 and -5 plus 2 is -3. 4 threes is 12 and minus it turns out to be positive. So our left hand side yields the result 12. हमारे पास 12 है. Let us solve it for right hand side. It is a square plus 3a plus 2. We substitute the value here. It is -5 square plus 3 times -5 and we have plus 2. And -5 square, it turns out to be plus 25. Square of negative is always positive. This plus and minus turns out to be -3 5 is 15 and plus 2. And we have plus 2. 25 positive है, 2 positive है, they will be added. It is 27 minus 15 and we have 12. Dear students, अब यहां ध्यान देने की जरूरत है. We have an equality. इस इक्वालिटी में हमने वेरिएबल देखा, इट इज a. वेरिएबल a का वैल्यू हमने 10 सब्स्टिट्यूट किया, वी गॉट LHS इक्वल्स RHS. हमने वैल्यू चेंज करके -5 लिया, वी गॉट LHS इक्वल्स RHS. तो हम कह सकते हैं कि हमने 2 वैल्यूज इधर ट्राई किए, ठीक, हम तीसरा भी कर सकते हैं, फोर्थ वन भी कर सकते हैं, ठीक है. बट अब अगर हमने 2 वैल्यूज पर देखा कि LHS RHS के इक्वल बनता है, अब अगर तीसरा वैल्यू चौथा वैल्यू लेंगे तो इसमें LHS और RHS का वैल्यू इक्वल बनेगा. वो इक्वालिटीज, यहां ध्यान देने वाली बात है, वो इक्वालिटीज जिसमें वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कुछ भी करे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बने, वही आइडेंटिटी है. Such an equality, we have a definition here. You see it. Such an identity, true for every value of variable in it, is called an identity.
So we have here a plus 1, a plus 2 equals a square plus 3a plus 2. So this is an equation. This is an equation. We have here sign of equality, the left hand side being equal to right hand side. लेकिन इसमें एक खास बात है कि जब एक का वैल्यू हम इस वेरिएबल का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बनता है, then only it is an identity. An identity is a statement. These expressions are statements. We have learned it in our previous lectures. These are the mathematical statements, expressions. बात कोई बात है ये. An identity is a statement that two expressions are equal for every value of the variable. Two expressions, the expression of the left hand side and the expression on the right hand side, both sides are equal for every value of variable. आपने वेरिएबल का वैल्यू लिया, दोनों साइड इक्वल बनेंगे. We have another example here. X plus x is 2x. Let us suppose put x equals 2. Okay, we have 2 plus 2 and it is 4. This is left hand side. Let us see right hand side. It is 2 times 2. It is 4. Let us check again. Left hand side, we have, say, 10 plus 10, it is 20. And let us see right hand side, it is 2 times 10, it is 20. This is an equation. This is an example of equation. Values change किए, LHS और RHS हर एक वैल्यू पर इक्वल बनेगा. दैट इज एन आइडेंटिटी. x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, नो मैटर व्हाट x इक्वल्स. अब यहां एक बात आती है, मैंने इक्वेशन लफ्ज भी इस्तेमाल किया. आई वो यूज द वर्ड इक्वेशन. व्हाट इज एन इक्वेशन? An equation is true for only certain values of variables in it. Let us consider this equation here. We have a square plus 3a plus 2 equals 132. Example की शक्ल में इसको समझते हैं, सीखते हैं. Taking a as 10. 10 square plus 3 times 10, plus 2 equals 132. 10 square is 100, 10 threes is 30, plus 2, we have a right hand side, it is given. Okay? And you see, adding the left hand side, you get 132. So for value of 10, the left hand side turns out to be right hand side. Let us check the same for minus 5. We have a square plus 3a plus 2 equals 132. Let us write here minus 5 square plus 3 times minus 5 plus 2 equals 132. Minus 5 square is 25, plus minus is minus 3 5 is 15, and you have plus 2 equals 132. I need to have here correction. ये bracket हमने इधर लिया. So 25 and 2 is 27 minus 15 equals 132. ठीक? So it is 12 equals 132. By LHS is not equal to RHS. Left hand side is not equal to RHS. हमने एक इक्वालिटी ले ली, एक इक्वेशन ले ली. वी हैव साइन ऑफ इक्वालिटी है, एक इक्वेशन है. हमने इसमें a का वैल्यू 10 लिया. यस, वी फाउंड दैट LHS is equal to 132 for the value of a being 10. Now if we change the value of variable to minus 5, LHS is 12 and RHS is 32. This is an equation, but this is not an identity, because equations
equations are true for some values, not for all values. इसीलिए यहां मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाई है. These equations, these can be equal to for some values, but these are not equal to all values. But for identity, it is equal for all values. So what is difference between an identity and an equation? Let us come to close. An identity is an equation. देखिए आइडेंटिटी इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन आइडेंटिटी एवरी टाइम नहीं है. An identity is an equation that is true for all values of the variables. इधर भी एक और एग्जांपल है. 3x equals 12 is true only when x equals 4. So it is an equation but not an identity. 3x equals 12. But it will not hold true for all values of x. x का वैल्यू कुछ भी चेंज कीजिए तो वो RHS के बराबर नहीं बनेगा. लेकिन वो इक्वेशंस जहां वेरिएबल कोई भी दीजिए और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बनेगा, दैट इज एन आइडेंटिटी. आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा डियर स्टूडेंट्स. हम आइडेंटिटी को किस तरह पहचाने और इनकी डिफरेंस क्या है विद इक्वेशन. अब इसके बाद हमने सीखना है कि आइडेंटिटीज की एप्लीकेशन किस तरह होती है. हमारे पास वी हैव टू अप्लाई दीज ऑन exercise 9.5. Let us make a quick recap. We started with what is an algebraic identity. We took an equality, we solved it for values, and we found that the two sides are equal for values of 10. हमने एक और एग्जाम्पल ले ली. We solved it for -5, the same equality, and we found LHS equals RHS. Here we came to conclusion that वो equality जहां वेरिएबल का कोई भी वैल्यू लेकर LHS और RHS इक्वल बनेंगे, that is an identity. So identity की हमने definition एक देखी कि it is a statement that two expressions are equal for every value of the variable. हमने इधर एक और एग्जांपल देखी. अब यहां हमने इक्वेशन लफ्ज इस्तेमाल किया, तो हमने इक्वेशन की बात की, हमने एग्जांपल्स दिए कि इक्वेशंस में वेरिएबल का वैल्यू दीजिए तो एवरी टाइम LHS इज नॉट इक्वल टू RHS and it is contrary to identity. That is why that is called identity. So identity is an equation that is true for all values of variables, but equations जो है वहां वेरिएबल्स के सारे वैल्यूज जो है वो ट्रू होल्ड नहीं कर पाते. An equation is not an identity. Thanks for being here. Thanks for your patience. We shall be continuing these lessons tomorrow, a day after tomorrow, and again. Thanks.